हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET एग्ज़ाम फैक्टर। CUET की प्रिपरेशन करते हुए हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट होंगे, एग्ज़ाम्स में पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से सिलेबस को अप्रोच करना चाहिए। तो वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्टर। आपके सारे सवालों का जवाब, सारे परेशानियों का रास्ता यहीं से होके जाता है। सवाल जवाब आपको सबके यहीं मिलेंगे। दिस इज़ CUET एग्ज़ाम फैक्टर। This is ExamFactor platform for complete guidance, complete knowledge, information about CUET UG 2024. Before beginning, let me introduce myself. My name is Tanmay Singh. I am currently pursuing BA Political Science Honours at Hindu College. I appeared in CUET UG 2022 and secured All India Rank 1. My percentile in all the 5 subjects that I have opted during the examination, that is economics, English, political science, history, geography, were 100 percentile I scored. Now, coming to the question of the moment, why I am here. I am here to share with you my experience, my tips and strategies that I adopted and planned during my preparation to guide you through this CUET UG 2024. Here I will share some of my tricks, my experience, and my approach towards this examination. First of all, after the completion of the whole syllabus, after revising it through multiple times, the most important thing that comes up is mock tests and practicing previous year questions. These are very important because these let you know which type of questions come in the examination, how to prepare, what should be your approach to that. Here, the most difficult thing is finding effective previous year questions. At my time, जब मैंने preparation start करी थी, it was very difficult to gather all the practice questions because we don't have previous year questions. It was a experimental batch. हम पहली बार appear हो रहे थे, हमें कुछ इतना पता नहीं था. But now you have the platform of ExamFactor, which provides the previous year questions for all the subjects including accountancy, business studies, economics, physics, geography, history, political science, English, and general test. So I would recommend that you should visit the official website of ExamFactor after this session and look at some of them. That will be very helpful for you. Also, after the detailed discussion, detailed completion of syllabus, what you need is one short revision to hit the nail on the head. So ExamFactor introduces you to crash courses. That is one short revision of a particular subject. This will be very helpful in retention of content because CUET एग्ज़ामिनेशन में हमें एक ही दिन में बहुत सारे पेपर्स लिखने होते हैं. सो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम कुछ ना कुछ कंटेंट मिस कर दें और रिवाइज करने का इतना टाइम नहीं होता. So these crash courses are very important. ExamFactor provides crash courses for accountancy, economics, mathematics, political science, English, and many more subjects. So this is very helpful in revising the whole syllabus in just an hour or two. So this would I say will be very helpful to you. Now, without any further delay, let us start the session. Let us start today's session. Here we will solve some PYQs. So you will get a gist of how the questions come in the examination and how you should approach them, how to solve them. So let's start. So the first question is,
In China, a campaign initiated in 1958 aimed at industrializing country on massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyard. This campaign was called. So let me brief you कि questions किस किस तरीके के होते हैं. Basically question तीन तरीके के होते हैं. One, that is based on facts, जो आपको मगअप करने हैं बस. You have to go through everything. So ये question एक वैसा question है जो facts पे base है. Economics में some questions you will find they will be numericals, जिसमें you need to solve and practice, and for that you need a lot of questions to practice. And the third set of questions is for analysis, assertion, reason. So this question does not have any explanation. इसमें ज़्यादा explanation का, ज़्यादा analyzing का scope नहीं है. So the right answer here. So the right answer here. Am I audible? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या मैं ऑडिबल हूँ? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए. सुन पा रहे हैं मुझे आप? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? Yes. So the right answer here would be the Great Leap Movement. Great Leap Movement, as you know, कि 1958 में चाइना में शुरू हुआ था, जिसमें करेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था काफ़ी. आगे चल के जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जब डिटेल में सिलेबस पढ़ा होगा तो, कि दिस मेट विथ टू प्रॉब्लम्स, कि द ग्रेट फेमाइन वॉज देयर, जिससे 30 to 40 million people died, and also let me check. एक मिनट बस. हेलो 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 हेलो. Am I audible? Hello. Just a second. Hello. 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 Okay. Now I am audible enough. वापस से शुरू करते हैं. तो कहाँ पे थे हम थे कि इसमें कुछ दो ड्रॉबैक्स फेस करे थे. वी वर डिस्कसिंग दोज ड्रॉबैक्स. तो फर्स्ट वाज द ग्रेट फेमाइन, जिसमें 30 to 40 million पीपल डाइड. और दूसरा, चाइना एंगेज विद अ कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया. तो एक्चुअली हुआ क्या था कि द रशिया स्पॉन्सर्ड सम इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चाइना. तो वो रशिया ने कॉल बैक कर लिए थे, तो दिस सफर्ड. सो द राइट आंसर हेयर वुड बी द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. As you can see here, you can also read if you want to. The same thing is there. The China 1958 Great Leap Forward, industrialization. This was tragically it was resulted in deaths. So, without any delay, let's move to next question. हाँ, this is a nice question. ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, और आई ऑलवेज वांटेड कि ऐसे क्वेश्चंस आए, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू इकोनॉमिक्स आई सी. सो द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स leads to increase in demand of good Y. How the goods are related. पढ़ के ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा,
So इस केस में the right way to approach is we shall look at some examples. We should look at the options. तो options क्या कहते हैं? Complementary goods, normal goods, inferior goods and substitute goods. तो लेट अस रिकॉल, हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. दीज आर दोज गुड्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. यानी अगर एक का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इफ़ द कंजम्पशन ऑफ वन गुड इज़ इंक्रीजिंग, दैट वुड साइमल्टेनियसली लीड टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड. कैसे, अभी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक है, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. If the price of petrol increases, so what will happen to the quantity of cars? Quantity of cars would go down. Why? Because जब कार में पेट्रोल भराने के पैसे नहीं होंगे तो फिर तो what the people will do of the car. So this is called as complementary goods. Normal goods, as you have all studied, are those goods whose income effect is positive. Income effect positive से क्या मतलब है मेरा, कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, सपोज you are earning 50,000 now and your income shoots up to 1 lakh. So आप certain goods का consumption बढ़ा देंगे, like wheat, rice. और इसी के रिवर्स केस में आते हैं इन्फीरियर गुड्स, जैसे बाजरा, तो उनका कंजम्पशन हम कम कर देंगे. तो दैट इज़ इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा. सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी. इफ़ द प्राइस ऑफ कोक राइजेस, तो जो डिमांड ऑफ पेप्सी होएगी, जो डिमांड ऑफ पेप्सी होएगी वो राइज करेगी, बिकॉज पेप्सी इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर कोक. सो द क्वेश्चन सेज द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स. सो हेयर what we need to keep in mind is the law of demand. Law of demand says that other things being equal, there exists a positive relationship between प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो अगर गुड एक्स की प्राइस राइज हुई है, इंक्रीज हुई है, तो द क्वांटिटी वुड गो डाउन, लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड वाई. तो इससे क्या हुआ है, डिमांड ऑफ गुड वाई इंक्रीज हुई है, यानी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड वाई. सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, yes, you are right, substitute goods. Let's move to next question. Choose the correct sequence from the following. The British introduced railways in India. Latest population census. Population explosion according to second stage of demographic transition theory. Year of Great Divide. First census conducted by British India. So ऐसे questions भी आते हैं and these are most common questions. मुझे भी, मैंने जब CUET दिया था तो these questions were quite common. So the main issue here is कि we don't remember dates but you have to mug it up. These are facts. इस questions में if you don't know all the dates then also आप थोड़ा सा guess work करके भी we can take the right answer. So when did the British introduce railways in India? It was in 1853. The latest population census, very easy, 2011. The population explosion according to second stage of the demographic transition, this also very easy. But suppose आपको ये नहीं पता है कि second stage का demographic transition population explosion कब हुआ था, तो let us leave this. Then year of Great Divide, everyone knows, 1921, and the first census conducted by the British India, that is 1881. So we have just
टू अरेंज हियर, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया, तो द ऑप्शन डी and option A remains, option B and C got eliminated. Then we have the first census of India, because this was in the year 1881. So this is correct, but ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ शोइंग द लेटेस्ट पॉपुलेशन सेंसस, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। तो द तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए एंड व्हाट रिमेन्स इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द टेक्निक जो मुझे भी काफ़ी ठीक लगती थी, कि एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड इफ़ यू गो बाय दिस। नाउ वी हैव the two statement type of questions. In question में the main thing is कि you need to go through NCERTs at least 2 to 3 times, because then only you will recall that कि हाँ ये तो पढ़ी थी NCERT में। What the statement says is, in 1960s, protection from foreign competition primarily enabled development of indigenous industries in electronics and automobile sector. ठीक है। Then the statement second, the public sector intervention played a crucial role in diversifying the industrial sector by 1919 beyond the traditional focus of textiles, jutes, leading to a well-diversified industrial landscape. So दो स्टेटमेंट्स हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो प्रोटेक्शन था फॉरेन कंपटीशन से, जो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी थी अपने डोमेस्टिक वर्कर्स, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए, उससे एक वेल डेवलप्ड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ का नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एज वी ऑल नो इज़ करेक्ट। एंड सेकेंड, द पब्लिक इंटरवेंशन, एज वी ऑल नो कि देर वॉज नो big private player at that time. Also private funding, also the funds that were required for the establishment of a well diversified industrial base was limited. So we adopted a socialist model. Jawaharlal Nehru and PC Mahalanobis in 1955 adopted this Mahalanobis plan, जिसमें well diversified industrial sector पे they focus, so that lead to a well diversified industrial landscape आगे चल के। This statement is also very correct. So if you want to read for 2 minutes, you can read from here. The protection from foreign competition played a vital role in enabling the development of indigenous industries in the electronics and automobile sector. By shielding these sectors from foreign competition, the government created a conducive environment for the domestic industries. वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले easy language में, bilingual language में explain किया था. So the answer is thus both the statements 1 and statement 2 are correct. So let's move to next question. These types of questions also come, and they are very irritating to me actually, because you have to remember all the concepts. So let's try. Regular salaried employees. Okay, so let us read. Permanent workers who owns and operates enterprise to earn, assurance of minimum 100 days employment, and common form of unemployment in rural India. So the most suitable is permanent workers. Self-employed, as we know, as the name suggests, the persons who run their own enterprise are self-employed. So option 3. So 1 goes with 4. So option B and C are eliminated. We have option A and option C. The self-employed goes with option 3rd. So the option A got eliminated. Thus, by elimination, we found that the correct answer is option C. Manrega, as we all know, is assurance of minimum 100 days of employment, and disguised employment is
where more labor, more force is there working, where the productive value of the force is reduced. So this guy's employment in the local terms छुपा हुआ बेरोजगारी. So the correct option is C. Let's move further. Benefits of organic farming is, so what is organic farming? Organic farming, as we know, the farming एक कमर्शियल बिजनेस बन गया है आजकल के ट्रेंड के हिसाब से. तो देर इज़ अ ह्यूज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, growing and cultivation of crops through organic methods such as manure and all that. तो इसके benefits क्या हैं कि labor intensive, environment sustainability and increases climate issues. So option B and option D are negative in nature. As you can point out, labor intensive उतनी नहीं है और क्लाइमेट को इससे बेनिफिट होता है, क्लाइमेट के इश्यूज होते नहीं. तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर. एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज़ जस्टिफाइड ऑल्सो बिकॉज द यूज़ ऑफ fertilizers and all is very rare, very limited. So there is a huge scope for environment friendly cultivation. Organic farming prioritizes the improvement of soil health, biodiversity, ecological equilibrium without restoring the synthetic pesticides, जैसे मैंने अभी आपको बताया था. Through methods like crop rotation, composting, biological pest management, organic farming aids in conservation. This is the same language जो कि आप NCERTs में भी you will find. So let's move to next question. Question 8. Which of the following statement accurately reflect the cost of food and non-food items cultivated using organic farming methods? तो कॉस्ट के बारे में कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. एज वी नो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी डोंट फोकस ऑन 100% productivity. We try to grow, cultivate crops naturally from manure. So they tend to be more expensive, tend to be more labor intensive types. So let's see the options. They are cheaper as compared to conventionally grown crops. तो ये तो हो नहीं सकता, cheaper तो होंगे नहीं. They are more expensive due to high labor inputs. ये हम मान सकते हैं, लेकिन आगे भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं. They have similar prices as conventionally grown items. This is true. No, true कैसे? The similar prices नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे. They are less nutritious compared to the conventionally grown. No, ये totally the statement is wrong. So we have two close statements that they are more expensive and they have similar prices. So in this case, इसमें what you have to do is you have to select the most appropriate sentence. So the most appropriate sentence here is they are more expensive due to higher labor inputs. So option B is the correct answer. The reason is explained here. You can go through it. The organic farming requires more labor input than conventional farming. Food and non-food items cultivated using organic farming methods are more expensive due to high labor inputs. Organic farming has more nutrition value. तो more nutrition value है, तभी the fourth statement is wrong. So now let us move to next one. Question 9. Now we have moved to question 9. Which of the following statement is true about autonomous transaction? सो ये क्वेश्चन आ गया एकदम से आपकी सेकंड बुक से, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर. सो हमने उस टाइम भी देखा था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, accommodating transactions and autonomous transactions.
ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दैट आर इनकलकेटेड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हम सब पढ़ के आए हैं, तो देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अच्छा, ये बात का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है कि कई बार CUET आपको ये कह देता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स और इनकरेक्ट, और हम क्या करते हैं, हम ट्रू समझ के उसको अटेम्प्ट करके आते हैं। तो द मेन thing to focus here is, the most important thing to focus here is, you need to go through the question once, twice and thrice. Although you know it how to attempt, but please go through the question thrice at least. These are also known as below the line items. These only occur in current capital account of BOP. BOP is said to be surplus if autonomous receipts are greater than autonomous expenditure. So let us attempt. Below the line transactions नहीं कहेंगे, below the line transaction accommodating transactions को कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में ही नहीं होते, कैपिटल और करंट अकाउंट में भी होते हैं। Both BOP is said to be surplus if, yes, the D is the correct option कि autonomous receipts अगर autonomous expenditure से ज़्यादा है तो we will say that the balance of payment is surplus. Now you can read here also, the autonomous transactions are those that operate independently of the prevailing income or expenditure within an economy. They are not directly swayed by fluctuations in the economic levels. Autonomous transaction receipts such as foreign aid remittances surpass autonomous payments like profits and investments. For an investment, the balance of payment is considered to be surplus. Which of the following is not true about the benefits of education? So ये फिर से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ गए हम। Raises the standard and quality of living, increases sweet income distribution, increases in participation rate, develops mental abilities. इसको भी हम काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी, तो ये करेक्ट है। देखो अभी मैंने कहा था ना कि नॉट ट्रू, द प्रीवियस क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट नॉट ट्रू। सो रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, डेफिनेटली ट्रू। Increases participation rate, participation rate means the increases participation in the economy, in the political spheres, that is also correct. Develops mental abilities, because education gives directions to think, provides a structure, provides a base for thinking and developing their own views. So option D is also correct. So what is incorrect is increases squid income distribution. Let us see how. You can also read here, increases squid income distribution is not true about the benefits of education. In fact, education can help to break the intergenerational transmission of poverty and reduce inequality of opportunity, which in turn reduces future income inequality. Education expansion has the potential to stimulate, achieve both efficiency and equity objectives, and education investment can play an important role in mitigating increasing in income inequality. While the net effect of the changing education outcome can initially tend to increase income inequality as a few more individuals gain higher educations and earning, it eventually lowers the inequality of education and earnings and education becomes more widespread. So द ऑप्शन ए वॉज नेगेटिव इन कैरेक्टर और इसीलिए ये गलत भी है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आ गया है पहला न्यूमेरिकल हमारा। व्हाट इज द इक्वेशन? सी जो कि है 40 प्लस 0.8y एंड आई मीन्स सब जानते ही होंगे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 10। देन व्हाट विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम? सो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट वेयर अ कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन केस ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट
and demand, in case of aggregate demand, aggregate supply, equilibrium is a state where C is equals to I. So if we want to find the equilibrium level of income, we can substitute C with I and solve the equation as follows. To find the equilibrium level of income, we need to equate aggregate demand C plus I with aggregate supply Y. So what would be here is C equals to 40 plus 0.8 Y, and then we have to solve this. On equating the equations will come the final answer to be 250. Hence the correct answer is option T. न्यूमेरिकल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी हैबिट में लाओगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ट्राई टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, new questions, because that will make you more familiar with options. So if you want to have a look at such questions, you can visit the official website of ExamFactor. There you will get segregated numericals for specific topics that will be very helpful in preparing. Now coming on to the question 12, what happens to countries' credit rating due to high fiscal deficit? High fiscal deficit is a situation where your expenditure is more than your receipts. So ऐसे केस में क्रेडिट रेटिंग यानी कंट्रीज एबिलिटी टू अचीव लोन फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसको क्या होगा? इम्प्रूव तो डेफिनेटली नॉट होगी, इम्प्रूव तो नहीं होगी, कांस्टेंट रहने नहीं वाली. अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई है, डिटोरेट्स, यस, कम ही होगी. A persistent high fiscal deficit and growing national debt can undermine government's credibility both domestically and internationally. A quite understood question. Now let us move to next. Which of the following has highest FDI? FDI क्या होता है? Foreign direct investment. Foreign direct investment, as we all know, is highest in India? No. China, Sri Lanka or Pakistan? The correct answer is China. You can also read here why China. China persistently garners the most foreign direct investment among the listed countries, primarily owing to its expansive market, swift economic expansion, and advantageous investment environment. The nation's strong infrastructure, manufacturing proficiency, and availability of skilled labor adds to its allure of international investments. It's basically the hub of manufacturers. All the products are made in China, as you can all see, because it provides incentives for manufacturers to invest. Hence more FDI. Now comes the price elasticity of demand is given by the formula. We all see what is elasticity of demand. As आप भी recall करेंगे, elasticity of demand is nothing but the proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price. तो delta Q upon Q into delta P upon P. So the correct answer will be option B. You can read the solution if you want, but this is something जो आप numerical practice कर करके अब तो आ गया होगा कि हाँ, this is quite easy. Now we have the last question. Arrange the following events in proper sequence. Ultraviolet radiation causes skin cancer. Okay. High level of chlorine and bromine compounds in the stratosphere. Fridge brought to house. Chlorofluorocarbons used as cooling agent. Depletion of
ओजोन लेयर। सो ऐसे स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, विल फाउंड टू स्टेटमेंट्स, हमें ऐसे दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे जो कि काफ़ी इंटरलिंक और क्लोजली लिंक्ड होंगे। जैसे फ्रिज बॉट टू द हाउस, जैसे जैसे ये वाला कि द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर हुआ है। तो इसमें हम यूँ देख सकते हैं कि ऑप्शन 5 के बाद ही ऑप्शन 1 आएगा, तो दैट इज़ 100% श्योर। तो ऐसे ऑप्शंस जिसमें ऑप्शन 5 के बाद 1 नहीं आ रहा है, उसको हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। सो by going this theory, option B and option D got eliminated, so we are left with option A and option C. Also हम देख सकते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड से ओजोन डिप्लीशन होगा। तो आफ्टर सेकेंड वी नीड फिफ्थ, सेकेंड के बाद फिफ्थ ही आएगा। सो ऐसा ऑप्शन जिसमें सेकंड के बाद फिफ्थ आ रहा है एंड फिफ्थ के बाद फर्स्ट आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन सी। सो बाय एलिमिनेटिंग ऑल वी come to the conclusion that option C is the correct answer. The sequence of events start with the introduction of refrigerators, जो कि quite easy था, लेकिन हमने इसको काफ़ी अलग उससे अप्रोच किया था, which led to the use of chlorofluorocarbons. The CFCs were released in the atmosphere, leading to accumulation of chlorine and bromine compounds. इन कंपाउंड से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हुआ था, जिससे अल्टीमेटली स्किन कैंसर आया था। क्वेश्चन इजी था, हम पढ़ के भी इसको ले सकते थे कि हाँ द सीक्वेंस वुड बी परफेक्ट, बट आई टोल्ड यू अनदर मेथड कि हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं कि वी कैन पेयर दी स्टेटमेंट्स, विच टू स्टेटमेंट्स विल गो टुगेदर and then substitute in the options to get the correct answer. So this is all for today. Hope you guys enjoyed the session. These were some samples of the questions that were there. ExamFactor on its official website has a whole lot of such questions that will blow your mind. आपको करके काफ़ी अच्छा लगेगा कि yes, I did something, because you will justify your study. Actually, PYQs and mock tests are a way of justifying your study. What you have studied, you recalled in the PYQs, in the mock test. This would release positive hormones in your brain, जिससे आपको और motivation आएगा. So, for cracking the CUET 2024, it's very important that you practice more and more PYQs, more and more questions. एंड ये सब आपको कहाँ मिलेगा? यू विल गेट ऑल दिस एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एग्ज़ाम फैक्टर. सो गाइज प्लीज़ डू विजिट देयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो go through the courses offered like the crash courses. These are very, very important for cracking the CUET. So thank you guys. Let's meet tomorrow.